Bismillahirrahmanirrahim. It's great honor that we are discussing a very important innovation and the use of information technology. See, this is the era of information technology and how we can use the information technology for educational purposes and for research. At the level of King Edward Medical University, we have also used the information technology in the form of the telemedicine. I'll be discussing in detail, and we have established now the interactive counters, the patient appointment, interaction with the patient, interaction with the doctors, and similarly the use of same technology in the form of the hybrid under and postgraduate medical education model, the national and international webinar. I'll start from the teleservices and telemedicine department of King Edward Medical University, which we established in March 2020, and so far we are working, I think, smoothly with this team and with collective efforts. This was basically the vision of Honorable Chancellor, Governor of Punjab, Chaudhry Mohammad Sarwar, and various dignitaries. They visited telemedicine department. Honorable Governor of Punjab inaugurated that department in March 2020. Then Health Minister, the various other ministers, our principals, they visited telemedicine department. And basically, during COVID, when our outdoor they were closed, this was one way the patient could have contact with the doctors. Currently, we are having the TeleOpd in the form of various counter. Beside tele-corona, we have got telemedicine, telesurgery, telepediatrics, telegynae, telepulmonology, telecardiology, teledermatology, telenutrition, teleophthalmology, televaccination, tele-ENT, teleobesity. And once the instructions were there from the health department about the dengue prevention, the awareness, the management, we especially established the counter in the name of the tele-dengue. So the people who are at the home, they can get the advice of the home management of the dengue fever. Similar in the case of the COVID management, the patient who are having the home isolation, they can get connected with our doctors. Now the mode of communication that include the mobile telephone, WhatsApp, Skype, and the area where internet facility is not available. I think the internet and the WhatsApp that was off a day yesterday, just yesterday. So we have also the facility of landline, so people from the villages, they can directly contact our doctor sitting on the counter at the level of the postgraduate resident registrar and the senior registrar. These are the number, the various counter, their number, landline, mobile, and the Skype number. And currently, we have provided teleservices to over 14,000 patients, and this is being regularly updated. I will just do a live presentation of this telemedicine department कि जब एक पेशेंट इंटरेक्ट करता है किसी डॉक्टर के साथ तो किस अंदाज में उसका डाटा अपडेट होता है, रिकॉर्ड कैसे सेव होता है और फॉलोअप उस पेशेंट का किस अंदाज में करते हैं. अभी थोड़ी देर के बाद हम लाइव कनेक्ट होंगे. दिस इज़ दी डॉक्टर पोर्टल. जितने हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके पास मोबाइल टेलीफोन है, और उस डॉक्टर पोर्टल पे जब नया पेशेंट आता है कोई, उस पेशेंट को ऐड करते हैं, उसका प्रोफाइल, हिस्ट्री, डायग्नोसिस, मेडिकेशन, एंड देन इफ डॉक्टर वांट टू सर्च द रिकॉर्ड ऑफ दैट पेशेंट, उस पेशेंट का नंबर या नाम एंटर करेंगे, रिकॉर्ड विल बी देयर. सिमिलरली इफ द डॉक्टर वांटेड टू सी द फॉलोअप ऑफ द पेशेंट कि पहले कितनी मरतबा कंसल्ट कर चुका है, तो ही कैन विजिट द डिटेल्स ऑफ दैट patient previous report. The doctor can see the patient appointment and he can search how many patients they have contacted him for the appointment. Now the patient, this is how the doctors and you people are going to enter the record of the patient name and details of all these things. And finally, once you enter the record, history, and then you write the prescription, that will be delivered to the patient. So patient can get the medicine on this prescription. This is how you can view the previous record of the patient, the visits of the patient, first visit and the second visit,
Similarly, we have got the patient portal, how the patient can get the appointment. This is the detail. और इसका तमाम इसमें टाइम आ जाएगा कि अपॉइंटमेंट के लिए आपको कौन सा टाइम चाहिए. आप उस टाइम को, डेट को लिख के यहाँ लाइक पेशेंट अपना ये तमाम चीज़ें लिखे, हिस्ट्री डिटेल लिखे, लाइक आपकी जो भी हिस्ट्री है, शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, आप कोई चीज़ लिख देते हैं, आप लिख के सबमिट करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप आ जाएगी. ये आई थिंक this sort of interaction, I think first time is in the history of the medical profession, and King Edward Medical University is taking a lead. This is the admin portal. अब admin का नंबर या मेरे पास होगा या इंचार्ज ऑफ टेलीमेडिसिन प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर और विद द डायरेक्टर IT, and admin will having the total record of all the patient. कितने मरीज देखे गए, क्या हिस्ट्री थी, क्या अद्वियात दी गई, किस स्पेशलिटी काउंटर पे कौन से मरीज थे, किन इजलास से कितने मरीज आए. इस वक्त अगर आप ये कहें कि पंजाब के किसी ज़िले का स्टेटिस्टिक हमें दिखाएं कि इस ज़िले से कितने मरीज़ों ने टेली कंसल्टेशन की, आई कैन शो यू देयर एंड देन नाउ. अभी आपको दिखा सकते हैं टोटल पंजाब का, टोटल पाकिस्तान का, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटरेक्शन, एंड द पीपल फ्राम आउटसाइड कंट्री दे आर कॉन्टैक्टिंग आवर टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट. किस मुल्क से कितने लोगों ने कॉल की, किस बीमारी के साथ की, और क्या सिम्टम थे, उनका क्या फॉलोअप था. ऑल द रिकॉर्ड इज देयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन. सो द एडमिन कैन व्यू द पेशेंट डिटेल, एडिट एंड डिलीट द डॉक्टर्स लॉगिन. आप ये चाह रहे हैं कि ये डॉक्टर ऐड करने हैं, अब ये डॉक्टर ऑफ हो चुके हैं. एडमिन कैन डू रिव्यू पेशेंट डायग्नोसिस एंड मेडिकेशन एंड व्यू द स्टैटिस्टिक्स, व्यू द पेशेंट रिपोर्ट एंड सर्च फॉर द अपॉइंटमेंट. यानी एडमिनिस्ट्रेशन वुड सी कि हमारे डॉक्टर्स किस अंदाज में काम कर रहे हैं, फॉलोअप ठीक है कि नहीं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है क्यों नहीं. दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन हैव द रिसर्च ऑन दिस टेलीमेडिसिन. आप दिस इज न्यू थिंग एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थिंग इन अ इंटरेक्टिव वे. इसी तरह कॉल करने वाले मेल और फीमेल, मेल साइड पे कॉल ज़्यादा हैं. उसकी वजह यह है कि द मेल दे आर कॉलिंग फॉर देयर ऑफ पेरेंट्स. सो द 62% आर द मेल एंड 38% दे आर द फीमेल्स. एंड देन व्हाट आर द सिम्टम्स. जब एक मरीज़ कॉल करेगा और वो ये कहेगा कि मुझे फीवर और कफ है, तो एक पेशेंट ऐड हो जाएगा. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट दे वर हैविंग द सिम्टम ऑफ द फीवर, द कफ, फ्लू, सोर थ्रोट एंड अदर सिम्टम, एंड दीज आर द various department and their contribution. The medicine took a lead, 4,798, followed by the other specialty. Their number is there. So in this way you can manage, monitor the performance of various department. This is the city wise call. अगर एक कॉल लाहौर से आज हुई, ऐड हो जाएगी. Maximum number of the call they are from Lahore, 7,626. इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, कराची, शेखपुरा, सियालकोट, दे आर द टॉप 10 सिटी. बट देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट जहाँ से लोगों ने कॉल नहीं की. मेड बी लैया, राजनपुर, डीजी खां, डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां, एवरीवेयर. एंड दीज आर द इंटरनेशनल कॉल. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉल दे वर फ्राम सऊदी अरेबिया एंड UAE, क्योंकि हमारे एक्सपैट्रिएट ज़्यादा इन ममालिक में थे. इसके साथ कुवैत, अमान, अफ़गानिस्तान, चाइना. सो सार्क रीजन, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप वर्ल्ड. और इसमें इस वक्त 45 कॉल और 46 कॉल दे आर फ्राम सऊदी अरेबिया. वी हैव गॉट द डिटेल्स कि कौन सा पेशेंट था, क्या नंबर था, क्या कंप्लेंट थी, किस काउंटर पे कॉल किया उन्होंने, क्या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, मेडिकेशन का इफेक्ट क्या था, फॉलो अप ऑफ द पेशेंट. ऑल दीज रिकॉर्ड दैट इज देयर विद अस. दिस इज द बिग डाटा and you can use this big data for your research purpose. And in the end we provide a performa to the patient. आपने इस डॉक्टर से इंटरेक्ट किया है, आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर जिसके साथ आपने कांटेक्ट किया है, इसमें 98% इज द सेटिस्फेक्शन फीडबैक and 2% people they wanted that we want to have the more information. And then the use of information technology in the medical education, under and postgraduate. We have the various webinar, the seminar, we have online assessment, final year की सप्ली का इम्तिहान online हमने लिया. And then we had the international and national webinar. Our director IT, Tariq Irfan, the department of IT is very active in webinar में. Federal Minister of Education, Federal Minister of Health, the provincial ministers, they participated. And this was one of the most important international webinar
under the banner of Belt and Road International Medical Education Alliance. ये basically China is leading that, और इसमें King Edward Medical University the founder member. 2020 के webinar में the inauguration was and the chief guest was the President of China, and King Edward Medical University was the guest of honor. Similarly, in 2021, the King Edward Medical University was the keynote speaker in this Belt and Road International Medical Education Alliance conference. And we continued with the online educations. We strengthened our campus management system. You all know we introduced this electronic monitoring system similar to the College of Physicians Surgeons Pakistan. We introduced, implemented and strengthened the learning management system. Then the world ranking of the university, how the universities they behave, they perform during the crisis and during this COVID. So by the grace of Allah Almighty, King Edward Medical University was among top 25 जिन्होंने कोविड में अच्छा परफॉर्म किया. And the all credit goes to you people. You are the frontline worker. You are the frontline soldier. Now the way forward. Every challenge comes with some opportunity. COVID challenge, dengue challenge, and probably these things will go on. So we have felt one thing: the telemedicine is the need of time. And we are going to establish this telemedicine department on permanent basis. There is a need of advanced skill lab, which by the grace of Allah Almighty, we are going to establish the advanced skill lab. And then, last but not the least, we have felt during this COVID waves and the dengue surge that we have got deficiency of our human resource in intensive care management, in emergency medicine, and in the infectious disease. And inshallah, we will establish the Institute of Infectious Disease in our new campus, Murid Ke Narowal Road. Any suggestion or question from your side? सर सबसे पहले तो सर आई विल प्रेज यू कि सर आप इन इस पूरे मूवमेंट को सर लीड कर रहे हैं, और सर इतने अच्छे तरीके से जिस तरह से आपने रिकॉर्ड मीटिंग सिखाई है, जिस तरह रिकॉर्ड हर पेशेंट का रखा जाता है, और कैसे सर यानी जो डॉक्टर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर दैट इज वेरी एग्जेम्पलरी. और सर आई हैव नेवर सीन सच अ सिस्टम बिफोर. जो डायमेंशंस खालिद साहब ने बताई हैं, यकीन कीजिए मुझे भी इसके बारे में इल्म नहीं था. इट्स अ रिमार्केबल इनिशिएटिव, और सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि हर काउंटर के ऊपर आपके पास बैकअप है मेडिकल फ्रेटर्निटी का. जब कोई इनोवेशन आती है तो हमारा सीना फ़ख्र से बढ़ जाता है कि हमारी मेडिकल हेल्थ फ्रेटर्निटी एक इनोवेशन लेके आ रही है. लेकिन जब हमारा आलमा हटा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जब इसमें कोई लीड रोल लेता है, तो यकीन मानिए कि हमारा खून सबा शेर हो जाता है. और इस बात का मुझे फ़ख्र है कि कैमकोलियन इस यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं, और पर्सनल ज़ातियात से बढ़ के ये है कि ही इज़ अ प्रोफेशनल, ही मीन्स बिजनेस, ही इज़ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, जो कि शेर की तरह फ्रंट से लीड करता है. और हमारी क्लास का, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक फ़ख्र है जिसका नाम है खालिद मसूद गोंदल.